Hello everyone, welcome to this video on current affair updates. My name is Ashish and today we are going to have a look at two of the very interesting news items of April 2020. So here are two news items taken from Bloomberg. This is the first one, which says that the Nassim Nicholas Taleb's advised Universa Tail Fund returned 3600% in March 2020. And second news item is that a Harvard professor, he reaps 17,000% return on his investment. So let's delve deeper into these news items. Take the case of the first one. So the gentleman on your screen is Mr. Nassim Nicholas Taleb, who is the author of a very famous book, The Black Swan. So according to him, what is a black swan event? An event which is highly unpredictable. It comes as a surprise, has a great impact and it can only be explained in the hindsight. तो ऐसी event को इन्होंने कहा है कि एक black swan event है. And Nassim Nicholas Taleb, he has said that the corona pandemic is not a black swan event. This event could have been predicted. सिर्फ इसकी टाइमिंग बताना was impossible, but it was always on the cards कि एक पेंडेमिक आने वाला है, because ग्लोबलाइजेशन इतना रैपिड हुआ था, सो इट वाज बाउंड कि ऐसी कोई पेंडेमिक आएगी. तो इसलिए इन्होंने कहा था कि द ओनली सॉल्यूशन कि आप इंश्योरेंस हर टाइम तैयार रखें, और ऐसा ही कुछ किया था यूनिवर्सा इन्वेस्टमेंट्स ने, जिसके ये एडवाइज़र भी हैं. And that is why this firm, Universa Investment, it gave 3612% return to its investor in March 2020. The strategy which was used is known as tail risk hedging. So it's a technical topic, so I am not getting into the detail of tail risk hedging. Those who are interested, they can Google it, what is this strategy. Let's move on to our next news item. The gentleman on your screen, he is a professor in Harvard University. अब इन्होंने एक कंपनी के स्टेक लिए हुए थे. कंपनी का नाम है मॉडर्ना, और ये कंपनी कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रही है, एंड दैट वैक्सीन इज सेट फॉर ह्यूमन ट्रायल्स. तो इस कंपनी के शेयर्स बड़े स्काई रॉकेट हो गए हैं, एंड हेंस दिस पर्सन हैज़ बिकम अ बिलियनियर. उनकी नेट वर्थ $1 बिलियन से ज़्यादा हो गई है. और इंटरेस्टिंगली लास्ट ईयर इनका इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने बोला था कि माई वेल्थ इज़ ऑलरेडी टू मच फॉर मी. तो इनकी वेल्थ तो ऑलरेडी इनके लिए बहुत ज़्यादा थी, अब बिलियनियर और बन गए. सो आई होप यू लाइक द न्यूज़ आइटम्स कवर्ड इन द करंट अफेयर अपडेट्स वीडियो. कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं. रिमेंबर द नेम ऑफ द प्रोफेसर, रिमेंबर द नेम ऑफ द company he invested in, remember the book authored by Nassim Nicholas Taleb, Black Swan, and also remember the investment firm and the strategy that they use. So that brings us to the end of this video. We'll again meet with some more interesting news items. Till then, have a great time. Goodbye.